हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। ये असम हिस्ट्री जीके सीरीज़ का 6th पार्ट है। अगर आपने बाकी सारे वीडियोस नहीं देखा हो देन यू शुड गो चेक देम आउट टू। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूपशी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। रूपशी एयरपोर्ट निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? करेक्ट आंसर इज टी, धुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज फेमस फॉर आइवरी कार्विंग इन असम। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आइवरी कार्विंग के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर इज सी, बरपेटा। एनिमल्स का टूथ्स एंड बोन्स काट के जो मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं उसे आइवरी कार्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ग्रेडियंट ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज। ग्रेडियंट ऑफ ए रिवर मीन्स रिवर का ढलान। करेक्ट आंसर इज ए, 14 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु बिल्ट द फेमस गुरुद्वारा इन धुबरी टाउन। धुबरी टाउन का फेमस गुरुद्वारा निम्न में से कौन से सिख गुरु ने बनाया था? करेक्ट आंसर इज गुरु तेज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन असम। निम्न में से सबसे घनी आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नागांव, धुबरी, ग्वालपारा और करीमगंज। करेक्ट आंसर इज बी, धुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद भूटान। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? करेक्ट आंसर इज बी, बोंगाईगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द सत्रास। बरपेटा, माजुली, जोरहाट और नौगांव। करेक्ट आंसर इज ए, बरपेटा। अलग अलग वैष्णव सत्रों के कारण बरपेटा इज कॉल्ड लैंड ऑफ सत्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट असमीज वुमेन टू विन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले असमीज वुमेन निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर इज बी, अंकुशिता बोरो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अंकुशिता बोरो इज एन इंडियन बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज वंस द कैपिटल ऑफ मट्टक किंगडम। निम्न में से कौन सा सिटी मट्टक किंगडम का कैपिटल था? करेक्ट आंसर इज डी, तिनसुकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज। ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल लेंथ कितना है? राइट आंसर विल बी 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अहोम किंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम शिवसागर टू जोरहाट इन द ईयर 1794। ईयर 1794 में कौन से अहोम किंग ने कैपिटल को शिवसागर से जोरहाट में शिफ्ट किया था? करेक्ट आंसर इज डी, गौरीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोगीबिल ब्रिज कनेक्ट्स द धेमाजी डिस्ट्रिक्ट विथ विच वन डिस्ट्रिक्ट। बोगीबिल ब्रिज धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है? तिनसुकिया, जोरहाट, लखीमपुर और डिब्रूगढ़। करेक्ट आंसर इज डी, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज का टोटल लेंथ कितना है? राइट आंसर इज 4.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रीवियसली नोन एज बांगमरा एंड चांगमाई पत्थर। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले बांगमरा और चांगमाई पत्थर नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर इज सी, तिनसुकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ मेघालय। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? ग्वालपारा, कामरूप रूरल, काछार और करीमगंज। करेक्ट आंसर इज डी, करीमगंज। करीमगंज मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन असम। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे कम घनी आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है? कार्बी आंगलांग, बक्सा, डिमा हसाओ और कोकराझार। करेक्ट आंसर इज सी, डिमा हसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। शहीद दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को शहीद दिवस पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिपदोल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द reign ऑफ। निम्न में से किनके शासनकाल में शिपदोल बनाया गया था? करेक्ट आंसर इज डी, शिव सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ असम? निम्न में से कौन असम के सबसे पहले स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं? हिमा दास, अंकुशिता बोरो, शिव थापा और महादेव टेका। करेक्ट आंसर इज ए, हिमा दास। हिमा दास इज एन इंडियन एथलीट स्प्रिंटर। उनका निकनेम है जिहिंग एक्सप्रेस एंड ऑल्सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन शी वॉज द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन असम पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोग्राफी स्मृति तीर्थ इज रिटन ऑन द लाइफ ऑफ। बायोग्राफी स्मृति तीर्थ निम्न में से किन के जीवन के ऊपर लिखा गया है? करेक्ट आंसर इज टी, नवीन चंद्र बरदलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नॉट इन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? निम्न में से कौन असम के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में नहीं थे? करेक्ट आंसर इज डी, शिव प्रसाद बरुआ। शिव प्रसाद बरुआ हैज नेवर बीन इन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन IIT गुवाहाटी? IIT गुवाहाटी में इंस्टॉल सुपर कंप्यूटर का नाम निम्न में से क्या है? राइट आंसर इज टी, परमिशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोईशागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच एथनिक ग्रुप ऑफ असम? द बोईशागु फेस्टिवल निम्न में से कौन सा जाति सेलिब्रेट करते हैं? बोरो, देवरी, डिमासा और राभा। करेक्ट आंसर इज ए, बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सांग विजिटेड असम इन द ईयर? ह्यून असम में कब आए थे? करेक्ट आंसर इज सी, 636 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year Assam was completely annexed into the British Empire? Correct answer is D, 1838। ईयर 1838 में असम को पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर हु किल्ड ड्यूरिंग फुलागुड़ी अपराइजिंग? फुलागुड़ी अपराइजिंग के टाइम पे निम्न में से कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर का हत्या कर दिया गया था? करेक्ट आंसर इज सी, Lieutenant Singer। Next question, under the Government of India Act 1935, total number of members in the Assam Legislative Assembly was? Correct answer is B, 108। And currently we have 126 members in the Assam Legislative Assembly। Next question, who was appointed as the first governor of Assam in the year 1921? Year 1921 में असम का पहला गवर्नर निम्न में से कौन थे? Correct answer is A, Sir Nicholas Pittson-Bell। Next question, what was the name of the astrologer of Lachit Barphukan? Correct answer is C, Achyutanand Doloi। Next question, according to Hyun Sung, circumference of Kamrup was? Correct answer is A, 1700 miles। Next question, Tungkhunjiya Buranji is written by? तुंगखुंजिया पुरांजी निम्न में से किसने लिखा है? करेक्ट आंसर इज डी, श्रीनाथ द्वारा बरबुरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अहोम किंग हु मैरिड द कोच प्रिंसेस मंगोला देवी? कौन से अहोम किंग ने कोच प्रिंसेस मंगोला देवी से शादी किया था? करेक्ट आंसर इज डी, प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लचित बोरफुकन वाज बोर्न? कौन से साल में लचित बोरफुकन का जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर इज बी, 1622। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड इन लीडरशिप नेक्स्ट टू लचित बोरफुकन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सरायघाट? बैटल ऑफ सरायघाट में लचित बोरफुकन के बाद नेतृत्व में दूसरे स्थान में कौन थे? करेक्ट आंसर इज डी, अतन बुरगोहाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Gohain Kamalali which was constructed during Naranarayan connects Kuch Bihar to? गोहन कमलाली रोड कुछ बिहार से कौन से स्थान को कनेक्ट करता है? नॉर्थ लखीमपुर, जोरहाट, उदालगुड़ी और डिब्रूगढ़। करेक्ट आंसर इज ए, नॉर्थ लखीमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कोच किंग नरनारायण डाइड? कोच किंग नरनारायण का मृत्यु कौन से साल में हुआ था? करेक्ट आंसर इज सी, 1587। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया इज? इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल लेंथ कितना है? करेक्ट आंसर इज ए, 916 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 288, व्हेन पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन असम? असम में पहली बार पेट्रोलियम कब डिस्कवर किया गया था?
Correct answer is B, 1889. Next question. Which of the following wildlife sanctuaries is located in उदालगुरी district? उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? करेक्ट आंसर इज बी, बोरनादी. बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which district ranked first in regards to density of population as per 2011 census? नौगांव, मरीगांव, धुबरी और कामरूप मेट्रो. करेक्ट आंसर इज डी, कामरूप मेट्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a recipient of the Padma Shri Award in 2018? पद्म श्री अवार्ड 2018 का रेसिपिएंट निम्न में से कौन नहीं थे? करेक्ट आंसर इज डी, ध्रुवज्योति बोरा. ध्रुवज्योति बोरा was not a recipient of the Padma Shri Award 2018. Next question. Who among the following was the first recipient of the Assam Valley Literary Award? निम्न में से कौन फर्स्ट रेसिपिएंट थे असम वैली साहित्य अवार्ड का? करेक्ट आंसर इज ए, भवेंद्रनाथ सैकिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल अष्टराग? करेक्ट आंसर इज ए, होमेन बोरगोहाइन. होमेन बोरगोहाइन इज द ऑथर ऑफ द नॉवल अष्टराग. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच रीजन ऑफ असम इज मेंशन्ड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, लास्ट पार्ट में भी था. एनीवे आंसर इज बी, दबका. इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन में असम को दबका के नाम से मेंशन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन वाज द कैपिटल ऑफ द म्लेच्छा डायनेस्टी? राइट आंसर इज ए, हदबेश्वर. हदबेश्वर वाज द कैपिटल ऑफ द म्लेच्छा डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप was the Treaty of Yendobo signed? Right answer will be C, Lord Amherst. Next question. Who became the first Assamese leader to have elected to the Congress Working Committee in 1926 to 27? The Congress Working Committee in 1926 to 27 में फर्स्ट Assamese लीडर के रूप में किनको चुना गया था? गोपीनाथ बोरदोलोई, तरुणराम फोकन, विष्णुराम मेधी और विमला प्रसाद चलिया. Right answer is B, Tarunram Phokan. Next question. The 10th annual special session of the Assam Sahitya Sabha 2019 held in? Correct answer is C, Raha. And 2023 का असम साहित्य सभा हुआ था नारायणपुर, लखीमपुर में. Next question. The police training college was first established in the year 1948 at? सही आंसर होगा A, सलोनीबाड़ी. 1948 में द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सलोनीबाड़ी में एस्टेब्लिश किया गया था. लास्ट क्वेश्चन. द मानस बायो रिजर्व वाज क्रिएटेड इन द ईयर? राइट आंसर इज बी, 1973. ईयर 1973 में मानस बायो रिजर्व का क्रिएशन हुआ था. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस.